Hello, dear student. So today we are going to learn about the basics of cholinergic drugs and how this how this cholinergic system work, what modification we are doing in our cholinergic drugs, the basic and all the important structure of the cholinergic drug. So let us understand what is cholinergic system. Okay, so we'll see the definition. The cholinergic system is a part of nervous system that uses acetylcholine is a primary or as a primary neurotransmitter. So here acetylcholine is a major neurotransmitter. Acetylcholine is a major neurotransmitter because here in cholinergic we saw in adrenergic system the major neurotransmitter is adrenaline. The major neurotransmitter is adrenaline. In demo class, we saw this. So in cholinergic system, the major neurotransmitter is acetylcholine. Okay. So this neurotransmitter is mainly responsible for the transfer of the chemical signal. Now we will see about the key features of this cholinergic drugs or cholinergic system. So here acetylcholine is released from the nerve ending. So we know this is neuron. Okay, so this is neuron. Now this is nerve ending. This is this is nerve ending. This is nerve ending. This is nerve ending. So acetylcholine is released from this nerve ending. So acetylcholine, which we denote by this symbol ACH, which is released from this nerve ending. Okay. Now, next point, it acts on the cholinergic receptor present in various tissue. Okay. So there are various cholinergic receptor which are present in the various tissue like heart, smooth muscle, eyes. So this acetylcholine act mainly on that receptor or that tissues. Okay. And this cholinergic receptor or this acetylcholine or the molecules of cholinergic system, they are mainly involved in muscle contraction, memory and learning and, and autonomic nervous system regulation. Okay, so this is the detail. This detail you will study in ecology, but in relation to chemistry, we will see the what modification in drug leads to the which effect. Okay, so we will see in detail about that. Now, cholinergic receptor. So as we discuss cholinergic receptors are present on the various sites and they are of mainly two types. They are mainly of two types. One is muscarinic receptor, second is nicotinic receptor. Okay, so muscarinic receptor is of five types: M1, M2, M3, M4, M5, and nicotinic receptor is of two type NM and N. So I will tell you what is this NM and N. So firstly, we will understand about the muscarinic receptor. Okay, so M1. So this is M1. This is M2. Then M3. I will write here M4, M5. Okay, so M1, which is present in the we will see the location. So M1 is present in CNS, M2 is present in heart, then M3, which is present in the smooth muscle, then eyes, then salivary gland, and all others secretory gland. Okay, so this is the location. Then M4, now this M4 and M5, they are again present in CNS. Okay,
So this muscarinic receptor is of G protein coupled type of receptor. So this is one of the type of receptor. As we saw, there are four types of the receptor: G protein coupled receptor, then ligand gated ion channel receptor, then third one is enzymatic receptor, then fourth one is nuclear receptor. So from this all four type, this muscarinic receptor is of G protein coupled type of receptor. Okay, now we will understand about the nicotinic receptor. About nicotinic receptor. So again, in cholinergic system, nicotinic receptor is of two types. Nicotinic receptor is of two types, NM and NN. So this is NM. Okay, this NM, which is present in the NM is present in the neuromuscular junction. You have to remember this. NM is present in neuromuscular junction. Okay, so this NM is present in neuromuscular junction. Then this NN, which is present in this NN is present in ganglia. Ganglia. Okay, now this NM and NN, these are nicotinic receptor. Okay, so these are of which type? Ligand gated ion channel. So these are fastest acting receptor. They may ask question, which of the following? Indirect question, which is fastest acting? And they will give option G protein coupled receptor, nuclear receptor, then an M receptor, or other may be different enzymatic receptor. So this NM is also it is also a ligand gated ion channel. It means it is a fastest acting receptor. So this kind of indirect question they may ask. Okay, so we will see about this. Now, coming towards the main part of our discussion, how this acetylcholine, this major neurotransmitter of cholinergic system, how this acetylcholine is synthesized. So we have to study that how this acetylcholine is synthesized. So acetylcholine, which is basically synthesized from this main amino acid, which is serine. So this amino acid serine is hydroxy type of amino acid. Hydroxy type of amino acid. Okay, because as you can see here, hydroxy groups are present. Okay, so this is hydroxy and this is polar type of amino acid. Why this is polar? Because hydroxy are present. This OH molecule, it is a polar in nature. Okay, so this serine is converted into 2-amino ethanol. Okay, so after removing of this, after removal of the some molecules, this it is converted into 2-amino ethanol. This CH2, CH2 and H2, it is converted into 2-amino ethanol. Okay, so serine decarboxylase. In presence of enzyme serine decarboxylase, it is converted into 2-amino ethanol. Okay, so decarboxylase. So carboxy group is removed by this enzyme. So that's why it is called, that's why the enzyme required is serine decarboxylase. Serine is converted into 2-amino ethanol. Again, we'll see the next. This 2-amino ethanol is converted into choline. Again, this is a major, this you have to remember. This you have to remember. This is the major starting material. Starting material for the synthesis of acetylcholine.
So I will draw simple structure here of acetyl of choline, okay, which is a basic moiety for the synthesis of acetylcholine. Okay, so this is the basic structure of choline. Okay, now this choline, which is again combined with acetyl CoA in presence of enzyme choline acetyl transferases, and it is converted into acetylcholine, which is a major major neurotransmitter of our cholinergic system. Okay, which is a major neurotransmitter of our cholinergic system. So simply we will see. See, I have mentioned this reaction here. This is choline, okay, which is a basic moiety synthesized from this amino acid serine, and this is acetyl CoA. This is acetyl CoA. This is acetyl CoA and this choline, which is getting combined in presence of enzyme choline acetyl transferases. It is getting converted into acetylcholine. Okay, this acetylcholine, which is the major neurotransmitter of cholinergic system. So this is most important. You have to just remember from which amino acid acetylcholine is getting synthesized, and what are the two main substrate, choline and acetyl CoA. So this is most important. Okay, so we will see again the synthesis. Again we will see synthesis. So this choline, you can see this choline, it is getting combined with acetyl CoA, and it leads to the formation of acetylcholine in presence of enzyme choline acetyl transferases. This is most important enzyme. This is most important. You need to remember this enzyme, choline acetyl transferases. I will highlight this one. This enzyme is most important. This enzyme. Okay. So this is the most important enzyme, choline acetyl transferases. Now again, this acetylcholine is uptake into the storage vesicle. This acetylcholine is stored into the vesicle. This is the vesicle, and this acetylcholine is stored in the vesicles. Okay. Why? Because this acetylcholine is protected from degradation in the vesicle. अब हम इसको एसिटाइल को स्टोर क्यों करेंगे? क्योंकि हमको डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करना है, इसलिए ये वेसिकल में ये सेफ है। तो इसमें इसको हमें इस वेसिकल में स्टोर करना है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये वेसिकल में तो क्लो अब ये वेसिकल में हमने इसको स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद उसको रिलीज भी तो करना है, क्योंकि फर्दर हमें एक्शन करने हैं बॉडी में। ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन का यूज करना है। तो कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम इसका रिलीज ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो ये रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये रिलीज को कौन ब्लॉक करता है? दिस रिलीज इज ब्लॉक बाय botulinum toxin. Okay, so they will ask question from this. This release is blocked by which toxin? So you have to remember this release of acetylcholine is blocked by botulinum toxin. Okay, release which is blocked by botulinum toxin. Okay, again after release, binding. The next step is binding to the receptor. Okay. Now, post synaptic receptor is activated by binding of neurotransmitter. It means देखो, इसमें क्या होगा? ये जो है ना न्यूरॉन, इसमें से ये जो वेसिकल है, वेसिकल से
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन। फिर वो पोस्ट सिनेप्टिक, मतलब ये जो गैप है ना, ये जो पूरा गैप है, ये गैप के आगे जो रिसेप्टर है वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है। इसके पहले जो रिसेप्टर है प्री सिनेप्टिक है, इसके आगे जो है वो पोस्ट है। ठीक है, तो ये एसिटाइल कोलिन इस पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा और ये अपना एक्शन शो करेगा। ठीक है, अगेन इन फिफ्थ इन फिफ्थ स्टेप दिस एसिटाइल कोलिन इज डिग्रेडेड। अब इसमें एक बात याद रखना कि एसिटाइल कोलिन रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मीन्स वो रैपिडली ब्रेक डाउन हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कैसा होता है एसिटाइल कोलिन का, रैपिड होता है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, acetylcholine is rapidly hydrolyzed. Okay, here here you can see acetylcholine is rapidly hydrolyzed by acetylcholine esterase in the synaptic cleft. So this all enzyme, you have to remember this enzyme, this acetylcholine esterase. This enzyme is most important. This enzyme is most important. This acetylcholine again it is degraded by acetylcholine esterase. Okay. अब ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन फिर से वही में होगा, कोलिन और एसिटेट, कोलिन और एसिटाइल कोए, क्योंकि बन बन भी उसी से रहा है ना, कोलिन और एसिटाइल कोएस, तो डिग्रेडेशन भी उसी में होगा। ठीक है, नाउ रिसाइक्लिंग। अब ये कोलिन जो है ना, ये सिक्स सिक्स जो स्टेप है वो देखो, सी दिस सिक्स स्टेप। ओके, दिस कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज इनिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम। ओके, अब ये कोलिन जो है ना, ये कोलिन जो ब्रेक डाउन हुआ, जो डिग्रेडेशन के बाद एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन, रिसेप्ट एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन के बाद जो कोलिन बना, वो फिर से वो फिर से रीअपटेक और रिसाइकलिंग होगा, और फिर से वो कोलिन के साथ फिर से एसिटाइल कोए आएगा। ये एसिटाइल कोए कहाँ से आएगा, ये क्रेब साइकिल से आएगा। क्रेब साइकिल, ये एक साइकिल होता है जिससे हमको एटीपी मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्रेब साइकिल से एसिटाइल कोए आता है और कोलिन रिसाइकल होता है। ये दोनों फिर मिलकर फिर से बनाते हैं एसिटाइल कोलिन, और फिर से ये साइकिल ऐसे ही चलता है, रिलीज होता है, रिलीज के बाद फिर उसका डिग्रेडेशन होता है, फिर रिसाइकलिंग होता है। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन में जो इनिबिट करता है रिसाइकलिंग को, कौन सा ड्रग है वो, हेमिकोलिनियम। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम हाईलाइटिंग दिस hemicholinium which is most important drug in this case. Okay, so now we will see the next. So अब हम मेजर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका, हमारे कोलिनर्जिक सिस्टम का, which is acetylcholine. So we will learn about acetylcholine. ठीक है, acetylcholine के बारे में पढ़ते हैं। So acetylcholine, I am I am drawing a simple structure of acetylcholine here. CH3 COO CH2 CH2 and CH3 CH3 CH3। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें पता है 5 होती है। अब इसमें 4 बॉन्ड है, तो इसको स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो स्टेबलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सो इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन में एसिटाइल ग्रुप होता है। ओके, दिस इज एसिटाइल ग्रुप और एसिटॉक्सी ग्रुप, दिस इज इथाइलिन ग्रुप। इथाइलिन, इधर भी देख सकते हो, इथाइलिन, एक कार्बन, दो कार्बन, एक दो, देन दिस क्वाटरनरी अमोनिया। अब देखो, ये नाइट्रोजन जो है ये 4 कार्बन को अटैच है ना, ये एक कार्बन है इधर, इधर कार्बन है। ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, सो ऐसे करके ये 4 कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको
क्वाटरनरी अमोनियम बोला है। ओके, क्वाटरनरी मीन्स चार। Okay, so this quaternary ammonium is most important in this acetylcholine. Okay, so this is quaternary, it means चार. Okay, so now मैंने अभी लास्ट में ही बोला ना कि और एसिटाइलकोलिन जो है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब इस हम इसके पीछे का रीजन देखेंगे, व्हाई इट इज नॉट यूज थेरापेटिकली और व्हाई इट इज गेटिंग रैपिडली हाइड्रोलाइज और व्हाई इसका थेरापेटिक यूज क्यों नहीं है। ओके, तो ये जो रैपिड हाइड्रोलिसिस मैंने बोला, रैपिड हाइड्रोलिसिस वही एक रीजन है जिसकी वजह से हम इसको थेरापेटिकली यूज नहीं करते हैं। इसके जो वेरियस एनालॉग्स है, एसिटाइल कोलिन के जो वेरियस एनालॉग है, मतलब एसएआर करते हैं हम इसका। ओके, तो एसएआर करने के बाद इसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद बहुत सारे हमें ड्रग मिलते हैं। ओके, तो ये ड्रग हम एक्चुअली यूज करते, डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन हम यूज नहीं करते। ओके, so why it is not used? Because it is having very short half life, it is broken or it is break down by this acetylcholine stress. Okay, इसको कौन इनिबिट करता है, ये लास्ट में हमें हमने पढ़ा इधर। ओके, so this degradation by acetylcholine stress. Okay, so दिस इज इनिबिटेड और दिस इज एक आगे एक ड्रग आएगा, तो ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को एक्टिवेट करेगा। ओके, एंटी एंटी कोलिनेस्टरेज हमको बोलेंगे, जो एंटी कोलिनेस्टरेज जो ड्रग होते हैं वो एंटी कोलिनेस्टरेज जो भी ड्रग होते हैं हम इसको बोलेंगे एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग। ये उसमें मेलाथोयन पैराथोयन ये जो ड्रग आते हैं, ये इस एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है, ये एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज इसको इनिबिट करेंगे। फिर क्या होगा, इसका हाफ लाइफ इंक्रीज होगा। सो हाँ, दिस इज लाइक दिस इज अ मोर डिटेल ऑफ कोलॉजी वी विल अंडरस्टैंड in respect to chemistry. Okay, so why it is not used? Because very short half life, then rapid hydrolysis. Okay, it is hydrolyzed rapidly because ester bond is quickly degraded in बॉडी। ओके, तो ये जो है ना, ये ये ग्रुप जो है ये ईस्टर है। ओके, ईस्टर, दिस इज बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईस्टर, ROR। ओके, so this is ester. Now then, poor absorption. Quaternary ammonium doesn't cross membranes or BBB. It means blood brain barrier. So quaternary ammonium. So एक चीज याद रखो, टर्शियरी अमोनियम और क्वाटरनरी अमोनियम। तो टर्शियरी जो होता है वो लिपोफिलिक होता है, ठीक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर कोई भी लिपिड मेम्ब्रेन पास करता है, ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड। वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। हाँ, सो टर्शियरी अमोनियम और क्वाटरनरी अमोनियम। ओके, तो टर्शियरी जो होता है वो लिपोफिलिक होता है, लिपोफिलिक, तो वो क्या होता है, क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ये लिपोफिलिक है ना, तो किसी भी ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर किसी भी लिपिड मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर जाता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, क्वाटरनरी अमोनियम है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये हाइड्रोफिलिक है तो ये तो लिपिड से क्रॉस होगा ही नहीं, तो ये नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं होता है, तो ये वही लिखा है। अगर क्रॉस ही नहीं होगा तो ये मेम्ब्रेन है, इसके आगे कुछ हमारे ऑर्गन है, कुछ पार्ट है बॉडी का,
ये लिपिड मेम्ब्रेन है, ये हमारा, अगर इसके आगे पास ही नहीं होगा तो हमें एक्शन ही नहीं मिलेगा। अगर ड्रग अंदर जा ही नहीं रहा तो एक्शन कैसे आएगा? ठीक है। सो दिस इज poor absorption. Now, non-selective action affects both muscarinic and nicotinic receptor, and it gives unwanted side effect. Okay. So the main thing is, ये जो एसिटाइल कोलिन है ना, ये नॉन सिलेक्टिव होता है। मीन्स ये निकोटिनिक ये निकोटिनिक और मस्केरिनिक दोनों रिसेप्टर पर काम करता है। अब हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लो, हमें चाहिए सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करे। हमारा जो एसिटाइल कोलिन है वो हमें चाहिए कि सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करे। तो हमने इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। ये जो एसिटाइल कोलिन है हमें चाहिए कि बस ये निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करे। हमने इसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, पर ये तो नॉन सिलेक्टिव है ना, तो ये मस्कैरिनिक पर भी काम करेगा और निकोटिनिक पर भी काम करेगा। और निकोटिनिक पर काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें हमारा इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। पर अनवांटेड इफेक्ट ही मस्करिनिक काम कर रहा है ना, तो ये इससे हमारा साइड इफेक्ट आएगा, अनवांटेड इफेक्ट आएगा, जिसको हम बोलेंगे साइड इफेक्ट। तो इसी वजह से हम उसको थेरेपेटिकली यूज नहीं करते हैं। ठीक है। नाउ अगेन कमिंग टुवर्ड्स द मेजर पार्ट, दिस कोलिनर्जिक drugs or cholinergic agonists are mainly classified into various types. These cholinergic agonists are classified into various types. We will see here. First type is direct acting cholinergic drugs. Okay, direct acting cholinergic drugs. उसमें क्या है, एसिटाइल कोलिन, बेथेनिकॉल, पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन. Okay, so acetylcholine, methacholine, then carbachol, bethanycol. Okay, so these are of direct acting type of the drug. Okay, so these are direct acting. We will see in upcoming class. We will see the chemistry of this drug also. Okay, so this is the most important drug: acetylcholine, beta, bethanycol, vilocarpine, methacholine, then carbachol, then muscarine, then pilocarpine. Okay, so I want to clarify here one point. I want to clarify one point. This acetylcholine, bethanycol, methacholine, and carbachol. Carbachol. Okay. So this is ester derivative. Ester derivative. Okay. And three more drugs are there: muscarine, pilocarpine, and ericoline. These are alkaloid. These are alkaloid. Means they are basic in nature. So this you have to remember. They may ask question from this. Okay. So this below carping. This is alkali. Okay. This is alkali. So this is about the direct acting. Now indirect acting. Indirect acting is cholinesterase. Cholinesterase. Okay. Anticholinesterase we can say. These are indirect acting are anticholinesterase. Okay. So indirect acting cholinergic agent. So
these are एंटीकोलिनेस्ट्रेल। ये क्या करेंगे पता है? ये ये इधर लिखना रहेगा। ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज है। मतलब ये क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को इनिबिट करेंगे। ठीक है। एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को इनिबिट करेंगे एंटीकोलिनेस्ट्रेज। ओके। So they inhibit the breakdown of acetylcholinesterase। इसमें दो टाइप है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इन दैट वाटर सोल्यूबल। सो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर नियोस्टिग्मीन, एंड्रोफोनियम, पायरोस्टिग्मीन। सो इसको ऐसे याद रखो, पेन पेन से याद रखो इसको। देन लिपिड सोल्यूबल, फाइसोस्टिग्मीन, डोनाजेपिल, टैक्रीन, गैलेंटामाइन। ओके। सो इसको याद रखो, जी डी पी। जीडीपी इज थर्ड। Okay, GDP is third of India in whole country, in whole world. Okay, now this is second one is irreversible inhibitor. So irreversible are organophosphorus compound, ecothiopate, malathion, parathion, tabones. Okay, one more is serine, one more is soman. Okay, so this two more important drug. Then reactivation of the acetylcholinesterase. Okay, acetylcholinesterase reactivator is pralidoxime. This is most important. Okay. So acetylcholinesterase reactivator. Okay. So this acetylcholinesterase, which is mainly responsible for acetylcholinesterase, this is mainly responsible, or it is mainly used in organophosphate poisoning. Okay. So this acetylcholinesterase, this pralidoxime, it regenerates the acetylcholinesterase activity. Okay, so you just remember acetylcholine reactivator is pralidoxime.